So good morning everyone. We are there with the subject BK chapter number 3, reconstitution of partnership firm. In that admission of a partner we have started. In the last lecture we have completed with all the theory parts. We have saw what is in my admission of partner. We have saw why there is a need of admission of partner. Then we have saw how to calculate the new ratio and old ratio, sacrifice ratio. And we have even saw the bill and the entries which are related to the goodwill, and we have even saw the journal entries which are there related to this chapter admission of a partner, right? So today we are going to start with the practical problems. So as I said in the question, it might ask you to prepare the journal entries, to pass the journal entries, or to prepare the ledger, right? So आपको question में जो भी पूछा है in the exam you have to prepare that only. Okay, today we are going to start with the problems which are based on journal entries. Okay, so in these questions they are asked you to prepare the journal entries. So very first problem I have taken is the problem which is there on your page number, textbook page number 135. So textbook page number, if textbook is there in front of you, you can see on test in page number 135, you can see one problem. Now the balance sheet of Sujata and Purnima, who shared profits equally, was as follows. Okay, so here Sujata and Purnima, who are they? They are the old partners. Okay, and what this information is given that they are sharing profits and losses equally, which means the ratio is 1:1. Okay, equally means 1:1. Below that balance sheet is given. So from this balance sheet, you will going to prepare your. It will be helpful for you to solve your problem. Okay, and after that, the information is given related to the adjustments and related to the new partner who is admitted. Okay, so we will going to start first. Now whenever we are going to solve the journal entries, always remember one thing. You have to see over here in the question whether it is given what is asked you. ठीक है, तो यहाँ पे clearly mention है कि draft the journal entries to record the above arrangements, right? So it is clearly mentioned over here that you have to pass journal entries. So whenever you pass journal entries, in that case, from this balance sheet, only the thing which is there, which is in need for you, is it will be uh, accumulated profit or accumulated loss. What it will be? Accumulated profit or accumulated loss. So accumulated profit यानी हमारे journal reserves, हमारे joint policy reserves, हमारे fund. ठीक है, so आपको what you have to see whether in the liability side any such reserve is given or not. Okay, now in this problem no such reserve is given, which means no accumulated profit is there on the liability side. Similarly on the asset side there is no accumulated loss. Okay, तो कौन सा accumulated loss है? That is profit and loss. ठीक है, तो अगर profit and loss asset side में दिया है then it will be your accumulated loss, और अगर वही profit and loss liability side में दिया है then it will be your accumulated profit. Okay, so what first thing you have to see whether in the balance sheet which is given in the question, in that any accumulated profit or any accumulated loss is given or not. Like in this problem there is no accumulated profit और ना ही कोई accumulated loss दिया गया है. ठीक है, then in such case we will directly start with the adjustment part. ठीक है, तो balance sheet से हम कुछ नहीं लेंगे. What we will going to do, we will going to start with the adjustment part. Now what is given over here? On 1st April 2018, Aparna joins the firm as a third partner for 1/5 share of future profits on the following terms and conditions. Okay, so who is our new partner? Aparna is a new partner and उसका share क्या है? It's 1/5 share of future profits on the following terms and conditions. Okay, so whenever the journal entries will be there, always go in sequence. जितना sequence में जाओगे उतना easy हो जाएगा आपको समझने के लिए. ठीक है, so always try to go in sequence. Now here if you will see, the first is goodwill का entry. So what it is said, goodwill is valued at 2 lakh. Aparna is to bring her share of goodwill in cash. What it is said, goodwill कितना वैल्यू किया है? 2 लाख वैल्यूड है और अपर्णा को कितना लेके आना है इसका शेयर ऑफ गुडविल? 8. ठीक है, it is mentioned, which means the firm's goodwill is 2 lakh and you have to find out
how much Aparna is to bring as his share of goodwill in करूंगी फिर. Okay, so here goodwill is valued, it's 2 lakh, so it is the goodwill of the firm. Okay, now Aparna is to bring her share of goodwill in cash, which means you have to find out, first of all, you have to find out the share of goodwill which is the amount given, right? It's 2 lakh given. Okay, so from this 2 lakh, what is the share? It's 1/5, so it's 1 upon 5, 5 ones are 5 fours are 20. So what will the share? It will be 40,000. So Aparna ka share kitna hai? It's 40,000. Okay, so Aparna has how much amount of goodwill Aparna will going to bring? It will be 40,000. Here 40,000 will be the amount, okay, that of goodwill the Aparna will going to bring. So as I said, जब भी आप journal entries pass करोगे, always go with the sequence, right? So first जो entry है, first जो information आपको दिया है, it is related to goodwill, ठीक है? It is related to goodwill brought by new partner, and when a goodwill is brought by new partner, तो आपको 2 entry pass करनी है, right? कितनी entry pass करनी है? 2 entry pass करनी है. First, the goodwill is brought in cash, तो entry क्या होगी? Cash account debit to goodwill account. What will be your entry? Cash account debit to goodwill account, being goodwill brought in cash by new partner, right? So कितना लेकर आया? हमने कैलकुलेशन किया था, फाइंड आउट किया कितना लेकर आया ये अपर्णा goodwill 40,000, right? So first entry will be goodwill brought in cash, right? Next will be goodwill account debit to old partner's capital account. Okay, so when we have saw the entries which are related to goodwill, in that we have saw retaining of goodwill withdrawn by the old partners, okay? Then we have saw raised off in the books, and then we have saw written off and raised off, right? Now in this problem कोई information नहीं दिया है related to withdrawn by old partners, ना ही कोई information दिया है related to raised off, और ना ही कोई information दिया है related to written off and raised off, right? So in such case we will going to assume that the goodwill has been retained in the business. हम क्या assume करेंगे कि goodwill को business में retain किया है. And whenever is goodwill retained in the business, then 2 entries have to be passed. पहला cash account debit to goodwill account, and second goodwill account debit to old partners capital account. So हमारे old partners कौन है यहाँ पे? Sujata and Purnima, right? So that's why our second entry will be goodwill account debit to Sujata's capital account to Purnima's capital account, being amount of goodwill distributed among all partners in sacrificing ratio, which means you have to calculate sacrifice ratio in this case, right? So sacrificing ratio scale, you have to divide the amount of goodwill, you have to divide the amount of goodwill of Aparnas to the between the old partners, among the old partners. Okay, so whenever the entry is given related to goodwill, you should be very careful कि आपको goodwill से related क्या information दी है, whether goodwill से related retaining की information है, या goodwill withdraw किया है old partners ने, या goodwill raised off हुआ है, ठीक है, या goodwill written off and raised off हुआ है. So you should be very careful what information is given related to goodwill. Now in this problem, no information was there. Only the information was goodwill is brought by new partner, right? इसलिए हमने क्या assume किया कि वो कौन सा entry है? It is the entry related to retaining of goodwill. That's why we have passed 2 entries, because in case of retaining, 2 entries are there in of goodwill, right? Cash account debit to goodwill and goodwill account debit to old partners. Is it clear, everyone?
Now the second is Aparna is to bring in 1 lakh as capital. Aparna भी क्या लेके आ रही है? Capital. So whenever new partner brings in capital, right? So 1 lakh लेके आ रही है, which means Aparna is bringing the capital in cash, right? So what will be your entry? It will be cash account debit to Aparna's capital account. So whenever a new partner brings in capital, what will be your entry? It will be cash account debit to Aparna's capital account. To Aparna's capital account, being capital brought by new partner. Being capital brought by new partner. कितना capital लेकर आई है? 1 lakh, 1 lakh. So 1 lakh and 1 lakh. Is it clear? So we have done the two entries where the new partner has brought in the goodwill and capital. Is it clear? Now the next is a provision of 10% is to be created on sundry debtors. What it is said? A provision of 10% is to be created on sundry debtors. So this is your RDD. ठीक है, तो क्या बोला है? RDD create करने बोला है 10% on sundry debtors, right? तो पहले हम entry pass करेंगे, then we will going to find out the 10%. Now tell me, when an RDD is created on debtor, whether the value of debtor increases or it decreases. Whether the value of debtor increases or it decreases. Correct, Preeti? The value of debtor decreases, right? So whenever the RDD is created on sundry debtors, because of that, the value of the debtor is decreases, right? और debtor क्या है मेरा? Debtor is my asset. यानी मेरा asset भी क्या हो रहा है? Decrease हो रहा है. यानी because of this RDD, my asset is decreasing. ठीक है? So this entry will be related to decrease in the value of asset. क्या entry होगी ये? Decrease in the value of asset. So your entry will be revaluation account debit to RDD account. What will be your entry? Revaluation account debit to RDD account, being decrease in the value of debtor. Being decrease in the value of debtor. तो कितना decrease हो रहा है अभी? कितना बोला है? 10% of debtor. ठीक है, तो how much is my 10% debtor? कितना है मेरा? It's 26,000 और 26,000 का 10% will be, it will be how much? 2,600. So 2,600. This is the amount of RDD. ठीक है, 10% of debtor, which means कितना decrease हो रहा है? 2,600. That's why it's mentioned over here 2,600. तो जितना decrease हो रहा है वही amount आप यहाँ पे mention करोगे. Is it clear this entry? When RDD is created on debtor, the value of debtor decreases. So whenever the value of debtor decreases, which means the value of asset is decreasing, and that's why your entry will be revaluation account debit to RDD account. Okay. Now the next is land and building is to be valued at 80,000. क्या बोला है? Land and building का value कितना बोला है? 80,000. Now here in the balance sheet, the value of land and building is given 60,000. Right? The कितना दिया? 60,000. And here it is said that the value is now revalued. उसका new value कितना है? 80,000. तो अब मुझे बताओ कि whether the value is increased or the value is decreased. The value of land and building is increased or it is decreased? 60,000 था, अब 80,000 हो गया है. Correct, Aditya? The value of land and building is increased, right? कितना increase हुआ है? 20,000 increase हुआ है, क्योंकि बैलेंस शीट में कितना था? 60,000. अब कितना वैल्यूड हो गया? 80. मतलब मेरा value of asset, value of land and building is increased. So whenever my asset will be increased, what will be your entry? It will be land and building account debit to revaluation account. What will be entry? क्योंकि land and building का value बढ़ गया है, तो land and building account debit to revaluation account, being
increase in the value of land and building. ठीक है, कितना increase हुआ? 20,000, क्योंकि पहले कितना था? 60,000. Now it is increased to 80,000. So कितना increase हुआ है? 20,000. So what the difference you have to mention over here. Okay. Now the next is stock, plant and machinery is to be reduced by 20%. अब दोनों भी reduced बोला है, ठीक है, तो stock भी reduce करने बोला है 20% और plant and machinery भी reduce करने बोला है 20%. Now stock and plant and machinery both are my assets और दोनों को reduce करने बोला है, which means दोनों भी decrease हो जाएंगे. So this entry will be related to decrease in the value of asset. Okay, अब दोनों भी साथ में ही बोला है, तो what I will, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग सेपरेटली दोनों को आप साथ में लिख सकते हो क्योंकि दोनों भी डिक्रीज करने बोला है. ठीक है, तो व्हाट विल बी एंट्री? इट विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट. ठीक है, एंट्री क्या है? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी. ओके, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक and plant and machinery. Okay, अब कितना डिक्रीज बोला है? 20% ऑफ स्टॉक एंड 20% ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. तो कितना स्टॉक है मेरे पास? आई एम हैविंग 40,000 स्टॉक. तो 40,000 का 20% विल बी हाउ मच? इट विल बी 4,000, सॉरी 8,000, राइट. 40,000 का 20% will be 8,000 and plant and machinery कितना है? 70,000. तो 70,000 का 20% will be 14,000, right? So 8,000 and 14,000. तो 8,000 स्टॉक रिड्यूस हो रहा है और 14,000 मेरा प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट रिड्यूस हो रहा है. तो if you will see over here 8,000 and 14,000. तो 8 plus 14 is how much? It is 22,000. टोटल यहाँ पे मेंशन करोगे 22,000. Is it clear this much? We have done with the adjustment part. Is it clear? Okay, so once you have done with all the adjustments, okay, then what you have to do, you have to close your account. ठीक है, आपको ये journal close, जैसे हम account close करते हैं वैसे हमें एक journal close करना है. We have to find out whether the revaluation is showing profit or whether the revaluation is showing loss. Okay, तो ये कैसे पता चलेगा? What you have to do, you have to credit minus debit. आपको क्या करना है? You have to credit minus debit, right? So वो आपको you have to find out the total of credit. ठीक है, तो कितना credit है? ओके, तो जहां जहां आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है यू हैव टू ऐड दैट, और जहां जहां आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है अगेन यू हैव टू ऐड दैट. ओके, सो क्रेडिट में कितना अमाउंट आना चाहिए और डेबिट में कितना अमाउंट आएगा? ओके, तो कहाँ कहाँ सबसे पहले हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है, वी विल गोइंग टू सी दैट. ओके, so if you will see in the first entry there is no revaluation, in the second there is no revaluation, and in the third also there is no revaluation, right? Next in the fourth, yes revaluation है पर वो डेबिट में है. ठीक है, in the fifth revaluation is there क्रेडिट में. ठीक है, तो एक क्रेडिट मिला हमको, कितना है? It's 20,000, right? प्लस एक ही क्रेडिट है, which means we are having only 20,000 क्रेडिट. अब डेबिट में यहाँ जहाँ आपका रिवैल्यूएशन डेबिट है यू विल गोइंग टू ऐड इट. कहाँ पे है आपका रिवैल्यूएशन डेबिट? इट्स ओवर हियर. So it is how much? 2,600, right? Plus it's over here. It's how much? 22,000, right? तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? It will be 24,600. Is it clear? So my credit amount is 20,000, whereas my debit amount is 24,000. तो अगर मैं माइनस करूंगी तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा. I will get minus 4,600. So if I'm getting minus after deducting credit में से debit, अगर आपको माइनस में आंसर मिल रहा है which means it is your loss. ये क्या है? आपका लॉस है. ठीक है, तो इसीलिए यह एंट्री will be of loss will be Sujata's capital account debit, Purnima's capital account debit to revaluation account, क्योंकि whatever is there left in the revaluation, whether it's profit, whether it's loss,
वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या ट्रांसफर किया जाता है ओल्ड पार्टनर्स को ही, न्यू पार्टनर को नहीं दिया जाता है, राइट? दैट्स व्हाई ओनली ओल्ड पार्टनर्स नेम इज मेंशन ओवर हियर. Sujata's capital account debit, Purnima's capital account debit to revaluation account being loss on revaluation transferred to partners capital account, right? कितना लॉस फाइंड आउट किया हमने? 4,600 and now it is divided among the old partners old ratio में. तो उनका old ratio क्या है? Equally, यानी 1:1. That's why this 4,600 has been divided into 2. ठीक है, equal है which means 2. तो 2 के हिसाब से the answer will be 2,300. 2,300. So सुजाता के इसमें 2,300 and Purnima के इसमें भी 2,300. Okay, so this is the way you will going to solve your journal entry. Okay, the only thing is you should know the journal entries properly. बाकी सब एकदम easy है. Is it clear this problem? Any doubt in this problem? We have done with this problem. Okay, so whenever you will going to solve journal entries from the balance sheet, what you have to see from this balance sheet only whether accumulated profit or accumulated loss is given or not. Okay, that only you have to solve, you have to see from this balance sheet. Is it clear? आई एम टॉकिंग अबाउट जर्नल एंट्रीज. हाँ, लेजर में पूरा बैलेंस शीट यूज होगा, और जर्नल एंट्रीज में सिर्फ जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस है वही आपको काम में आएगा. बाकी बैलेंस शीट में ओनली यू हैव टू बी, यू कैन यूज दिस बैलेंस शीट फॉर कंपेयरिंग द एसेट्स, के एसेट बढ़ रहा है या एसेट कम हो रहा है. इज इट क्लियर दिस प्रॉब्लम एवरीवन? एनी डाउट? Okay, then we will going to start with the next problem then. Now this is a problem which is there in your textbook page number, अनसॉल्व प्रॉब्लम है ये आपके पेज टेक्स्ट बुक का. सो इट्स देयर 161. So it's there on your page number 161 of textbook. Okay, so the problem is given in front of you. So Amalendu and Samir share profits and losses in the ratio 3:2 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2017 was as under. Okay, so here the information is given to you where two partners, so these two partners are the old partners, Amalendu and Samir, ये दोनों old partners हैं. ठीक है, और उनका जो old ratio है वो कितना है? It's 3:2. ठीक है, then they had said the balance sheet is given to you as on 31st March 2017. Okay, next, on 1st April 2017, they admit Paresh into partnership. तो यहाँ पे new partner कौन है? Paresh is your new partner. The term being that, ठीक है, और उसके terms और conditions देके रखे हैं. ठीक है, तो one by one we will going to see all this entries and then we will going to record. तो ये सारे adjustments को लेके we will going to record the entries. Now before that, as I said, in the from the balance sheet, whenever the journal entries is asked, what you will going to see whether any accumulated profit या any accumulated loss is given or not in the balance sheet. Okay, so I just want to know from your side whether you can see any accumulated profit or accumulated loss in the balance sheet.
Okay, Aniket, it's correct. There is one accumulated profit given. So if you will see over here, general reserve is given. So general reserve is your accumulated profit. ठीक है, जनरल रिजर्व दे के रखा है, तो ये रिजर्व है which is mentioned, which means it is given over here. So what you will going to do, so whenever if any general reserve is given, first entry you will going to pass related to the accumulated profit or accumulated loss which is given in the balance sheet. ठीक है, आप बाद में भी पास कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर पहले पास करोगे तो इट विल बी इजी, देन यू कैन फोकस directly on the adjustments which are given. Okay, so whenever you will going to start with the journal entries, the first step you have to see whether in the balance sheet any accumulated profit or any accumulated loss is given or not. So in this problem it is given general reserve is given, right? इसलिए आपका फर्स्ट एंट्री क्या होगा, इट विल बी रिलेटेड टू जनरल रिजर्व ओनली. So if you will see over here, general reserve account debit to MLN's capital account to Samir's capital account. So whatever accumulated profit or accumulated loss will be given, it will be always divided in between the old partners. ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ही उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, न्यू पार्टनर को नहीं दिया जाता है, राइट? सो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू MLN's capital account to Samir's capital account, being general reserve distributed among old partners. Now, how much is general reserve given? It was given 20,000. 20,000 दिया है, ठीक है. अब 20,000 को उन्होंने डिवाइड किया है amongst the old partners in their old ratio. And what is my old ratio in this problem? It is 3:2. मेरा old ratio क्या दिया है? 3:2, right? So if सबसे पहले मैं डिवाइड करूंगी 20,000 को 3/5 से, what will be my amount? 5 1 जा 4 जा 4,000 into 3, it will be 12,000, right? तो कितना शेयर आया मेरा फर्स्ट पार्टनर का? इट्स 12,000. I had mentioned over here 12,000, right? Now second, my second partner is Samir. तो समीर का शेयर अभी it will be 2/5. Again cut 4,000. तो 4 2 जा 8. तो मेरे सेकंड पार्टनर का शेयर कितना आया? 8,000. ठीक है, तो 12 plus 8, it will be 20,000, right? So whenever the general reserve is mentioned, it is given in the liability, and this is the way you have to pass the entry, and you have to divide the amount amongst the own partners in their old ratio, which will be given in the problem. Is it clear, everyone? General reserve. Now once if you have done with the balance sheet में अगर जो भी accumulated profit या loss से अगर आपका हो गया, then you can start with the entries which is given with the adjustments which are given. ठीक है, now here one by one we will going to see 1 2 3 are given. First, he shall pay 16,000 as his share of goodwill. 50% amount of goodwill shall be withdrawn by the old partners, right? So first information is given that the Paresh has brought 16,000 as his share of goodwill, ठीक है, and the second information is given out of the 16,000, 50% amount of goodwill has been withdrawn by the old partners. Okay, so this is the entry which is related to goodwill. Second point, ठीक है, second point में ना withdraw of goodwill by all partners. ठीक है, तो this is the entry which is related to goodwill का second point. ठीक है, तो whenever the withdraw का entry होगा तो how many entry we will going to pass? We will going to pass 3 entries. ठीक है, कितने entries पास करोगे आप? 3 entry पास करोगे related to goodwill. Okay, so if you will see over here goodwill, ठीक है, तो if you will see over here goodwill, first entry will be cash or bank account debit to goodwill account. Cash or bank account debit to goodwill account. This will be your first entry. Next, goodwill account debit to MLN's capital account to Samir's capital account, right? Withdrawn में 3 entries हैं. पहली entry क्या होगी? Cash और bank account debit to goodwill. दूसरी entry क्या होगी? Goodwill account debit to MLN's capital account to Samir's capital account. And what will be your third entry? The third entry will be withdrawn की entry. It will be MLN's capital account debit, Samir's capital account debit to cash or bank account, being half of the goodwill amount withdrawn by all partners.
ठीक है, अब कैलकुलेशन बाद में देखेंगे, पहले आपको ये समझना है कि whenever the information is given related to goodwill and it is informed you that the old partners had withdrawn the goodwill, then three entry will be passed related to goodwill. First will be your cash or bank account debit to goodwill. Second will be your goodwill account debit to old partners capital account, and third will be your old partners capital account debit to cash or bank. Is it clear? तो हमने यहाँ पे तीन एंट्री देखी, थ्री एंट्रीज. पहली ये whether goodwill is brought by new partner की एंट्री. सेकेंड ये जो भी गुडविल है वो डिस्ट्रीब्यूट किया वो अमंग ओल्ड पार्टनर्स में. एंड थर्ड एंट्री विल बी जो भी गुडविल है उसको विड्रॉन किया है ओल्ड पार्टनर्स ने. Is it clear? Goodwill से related entries. Now, if you will see the amount in the first 16,000 goodwill लेकर आया, तो 16,000 they have mentioned. In the second, जो भी 16,000 है वो divide किया amongst the old partners in their which ratio? Sacrifice ratio, all ratio. In the sacrifice ratio, so you have to calculate sacrifice ratio over here. तो ये इसको divide किया उन्होंने अपने sacrifice ratio में, right? And in the third, what you will see कि they had divided, ठीक है, what it said, half of the amount of the goodwill. तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, सिर्फ 50% ही विड्रॉ किया है. ठीक है, तो जब आपकी थर्ड एंट्री होगी विड्रॉ की, वहां पे आप कितना वहां कैलकुलेट करोगे, सिर्फ 50% ही डिवाइड करोगे क्योंकि 50% ही विड्रॉ किया है. तो 16,000 मेरा जो गुडविल नया पार्टनर लेकर आया उसका 50% विल बी 8,000. तो यहाँ पे विल सी 8,000 इट इज मेंशन. तो 8,000 को उन्होंने डिवाइड किया अमंग्स द ओल्ड पार्टनर्स इन द रेशियो. ओके, so this is the way you will going to write the journal entry if it is related to goodwill. Is it clear this point? Goodwill का. Okay, now your second point is he shall have to bring 20,000 as his capital. ठीक है, तो 20,000 कैपिटल लेके आया नया पार्टनर. ठीक है, तो व्हाट विल बी एंट्री, और इट विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, नया पार्टनर कौन है, परेश, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू परेश कैपिटल अकाउंट. राइट, तो यहाँ पे एंट्री ऊपर नीचे हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप पहले कैपिटल की भी लिख सकते हो, आप पहले गुडविल की भी लिख सकते हो. एज आई सेड कोई प्रॉब्लम नहीं है सीक्वेंस में. ठीक है, बट द सीक्वेंस विल बी इजी. अगर हम स्टेप फॉलो करेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू सॉल्व. ठीक है, तो हम ये कैपिटल की एंट्री नीचे लिखेंगे, गुडविल की एंट्री पहले लिखेंगे, देन टू इट्स राइट. ठीक है, कुछ रॉन्ग नहीं है. Okay, so whenever new partner brings capital, then what will be the entry? It will be cash or bank account debit to, यहाँ पे नया पार्टनर कौन है, परेश, तो टू परेश कैपिटल अकाउंट. being amount brought in for capital by परेश. कितना लेकर आया कैपिटल, 20,000. Okay, so we have done with three entry. General reserve distribute किया हमने. We have distributed, we have put the entries related to goodwill, and then we have related to capital, we have done the entry. Right, now the next third point is, for the purpose of Paresh admission, it was agreed that the asset would be revalued as follows. Okay, so there is a revaluation of asset. So one by one we will going to see the assets which are revalued. सबसे पहला क्या है, land and building. क्या बोला है, कितना new value कितना दिया है, 60,000. The land and building is revalued at 60,000. Now you have to see in the balance sheet कि balance sheet में land and building कितना दिया है. It is given 50,000. कितना दिया है, 50,000. यानी रीवैल्यूड अमाउंट कितना है, 60,000. तो डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ लैंड एंड बिल्डिंग, whether the amount of land and building is decreased or the land of building amount is increased. Correct Aditya, the land amount is increased. And how much it is increased, 10,000. 50,000 था, अब कितना दिखा रहा है, 60,000, which means 10,000 बढ़ गया है. Right, so what will be your entry then? It will be land and building account debit to profit and loss adjustment account. What will be your entry? Land and building account debit to profit and loss adjustment account. कितना increase हुआ, 10,000. कितना increase हुआ है, 10,000. ठीक है, next, plant and machinery to be valued at 16,000. plant and machinery का value कितना बोल रहा है,
16,000। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे प्लांट एंड मशीनरी कितना है 20,000, ठीक है, विच मीन्स प्लांट एंड मशीनरी बढ़ा या कम हुआ? द अमाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज इंक्रीज और इट इज डिक्रीज? In the balance sheet, it is given 20,000. Here it is 16, which means my amount of plant and machinery is decreased. Okay, कितना decrease हुआ है? 4,000. कितना decrease हुआ है? 4,000. तो मेरा land and building increase हुआ 10,000. ठीक है, ठीक है, increase हुआ है और यहाँ पे मेरा it is decreased. Right. Next, stock value 20,000 and furniture and fixture is at 4,000. तो पहले स्टॉक का वैल्यू हम देखेंगे, स्टॉक बढ़ा है या कम हुआ है, ठीक है। तो स्टॉक कितना है यहाँ पे? इट्स 16,000 ओवर हियर। स्टॉक कितना दिया है? 16,000 एंड ओवर हियर इट इज मेंशन 20,000, व्हिच मींस माय स्टॉक अमाउंट इज इंक्रीज। स्टॉक का अमाउंट क्या हो गया मेरा? बढ़ गया है। whereas फर्नीचर का अगर हम देखेंगे इट्स गिवन ओवर हियर 4,000 एंड इन द बैलेंस शीट इट इज गिवन ओवर हियर 8,000, यानी 8,000 से 4,000 हो गया है, which means the amount of furniture has been decreased. Okay, so if you will see all the assets, हमने और जितने भी assets देखे हैं, if you will see land and building क्या हो गया है? Increase हो गया, plant and machinery decrease हो गया, stock का amount increase हो गया, furniture का amount decrease हो गया। और जब भी RDD होता है डेटर पे तो डेफिनेटली आपका डेटर का अमाउंट हमेशा क्या होता है? डिक्रीज। यानी आपके कौन से एसेट इंक्रीज हो रहे हैं? लैंड एंड बिल्डिंग और स्टॉक। और कौन से एसेट डिक्रीज हो रहे हैं? वो प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड योर आरडीडी विल बी देयर। ठीक है, क्योंकि डेटर डिक्रीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है? आरडीडी की वजह से, राइट। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग पुटिंग द सेपरेट एंट्रीज, आप इनको कंबाइन कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों भी बढ़ रहे हैं तो इनको मैं साथ में कंबाइन कर रही हूँ और ये तीनों भी कम हो रहे हैं जिस वजह से मेरा एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, तो इनको मैं कंबाइन करके एक ही एंट्री पास करूंगी। ओके, सो इफ यू विल सी ओवर हियर only one entry has been passed which is related to this। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग और स्टॉक, क्योंकि दोनों का वैल्यू बढ़ रहा था इसलिए दोनों को कंबाइन करके एक एंट्री पास की। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 10,000 इंक्रीज हुआ, स्टॉक अकाउंट डेबिट 4,000 इंक्रीज हुआ टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो 10 plus 4 is how much? It is 14,000। Similarly, if you will see over here, मेरा प्लांट एंड मशीनरी डिक्रीज हुआ रहा, फर्नीचर डिक्रीज हो रहा था और आरडीडी क्रिएट किया था डेटर पे, तो ये तीनों भी चीजें ने एसेट का वैल्यू को डिक्रीज किया। दैट्स व्हाई द एंट्री इज पास्ड, कंबाइंड एंट्री हैज बीन पास्ड। इट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, टू फर्नीचर, टू आरडीडी। तो तीनों का अमाउंट यहाँ पे मेंशन किया है। 4,000 डिक्रीज हुआ था प्लांट एंड मशीनरी का, फर्नीचर का 4,000 डिक्रीज हुआ था और आरडीडी कितना निकाला? 1,200। तो तीनों को एड अप करने के बाद टोटल इज 9,600, राइट। तो अगर ये कंफ्यूजिंग लगता है तो यू कैन पास द एंट्री सेपरेटली, और अगर आपको लगता है टाइम बचेगा तो यू कैन पास अ कंबाइंड एंट्री कैन बी पास, राइट। इन द बोथ द मैनर इट्स करेक्ट। Okay, so this is the way you will going to record the increase or decrease in the value of assets and liabilities. Is it clear this much? So we have done with the entries recorded related to goodwill. We have done with the entries with the capital brought by new partner, and then we have saw the entries related to the assets, revaluation of assets. Okay, so जैसे ही आपका सारा adjustments खत्म हो जाएगा, then what you will going to do? You will going to close your revaluation account. So as I said, in which manner? Again, credit minus debit. तो जहाँ आपका revaluation या profit and loss adjustment account क्रेडिट हुआ है उसका टोटल करोगे आप। कहाँ आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है उसका टोटल करोगे, राइट। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिर्फ ये दो ही एंट्री है जहाँ पे रिवैल्यूएशन आया है, इसके अलावा रिवैल्यूएशन आपको कहीं पे दिखा नहीं दिखा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे डेबिट हुआ है तो ये डेबिट का अमाउंट कितना है? इट्स 9,200। और यहाँ पे अगर आप देखोगे क्रेडिट हुआ है तो कितना क्रेडिट हुआ है? 14,000। तो अगर 14,000 को में से मैं 9,200 माइनस करूंगी तो व्हाट विल बी माय अमाउंट? कितना होगा? 008, ठीक है, एंड 4। तो व्हाट विल बी माय अमाउंट? इट विल बी 4,800। अब क्योंकि ये पॉजिटिव में आया है, 4,800 पॉजिटिव है, विच मीन्स दिस इज अ प्रॉफिट, करेक्ट अनिकेत? तो दिस इज माय
प्रॉफिट। अगर मेरा नेगेटिव में आंसर आता है तो वो मेरा लॉस होता है। यहाँ पे पॉजिटिव आंसर है विच मीन्स दिस इज माय प्रॉफिट। और इफ प्रॉफिट इज देयर ऑन रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में, तो व्हाट विल बी योर एंट्री? इट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एमएलएनडूस कैपिटल अकाउंट टू समीर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि जो भी प्रॉफिट है या लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में, वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है इन दैट ओल्ड रेशियो। अब कितना प्रॉफिट निकला? 4800। तो मैंने इसको डिवाइड किया अमंग्स द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। तो 4800 इंटू 3/5, क्योंकि ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2। तो 5 1 जा एंड इट विल बी हाउ मच? 960। तो 960 into 3 is how much? 2880. Okay, so if you will see over here, 2880 was the share of एमएलएनडू, और जो बचा हुआ शेयर है वो किसका है फिर? समीर का, which is 1920. Okay, so this is the way you're going to solve your journal entries. Okay, एकदम easy है. Only one thing you have to remember, you should follow the sequence, try to follow the step sequence properly and try to बाय हार्ट द जर्नल एंट्रीज। क्योंकि जब तक जर्नल एंट्रीज बाय हार्ट नहीं होगी तब तक आपको जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करने नहीं आएगी। इज इट क्लियर दिस प्रॉब्लम? इज इट क्लियर जर्नल एंट्रीज? Any doubt is there? Any point that you have not understood? Okay, so we have saw two problems which are related to journal entries. Okay, in the next lecture we will going to see the problems which are related to ledger, in which ledger is asked to prepare. Okay.